Good morning, students. My name is D.J.Chouhan and I teach you accountancy subject. Accountancy के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझा दिया था। अपन जो अपना अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है उसमें चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। फर्स्ट पॉइंट इज मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी आप समझ चुके हैं क्या है, अकाउंटिंग बता रहा हूं। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, analyzing and interpretation and communicating business transaction to the users for the decision making। मतलब अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग is a process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpretation and communicating accounting information to the users for the decision making। मतलब अपन को बिजनेस में कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले अपन को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है या जो भी बिजनेस इंफॉर्मेशन होती है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, फिर उसको मेजर करना पड़ता है, फिर रिकॉर्ड करना पड़ता है, रिकॉर्ड करने के बाद उसका क्लासिफाइंग करना पड़ता है, फिर समराइज करना चाहिए, समराइज करना पड़ता है, मतलब उसका रिजल्ट निकालना पड़ता है, फिर उसको एनालाइजिंग करके उसको उसके जो यूजर्स है उनके साथ में कम्युनिकेट करना पड़ता है। दैट इज अकाउंटिंग। तो इसकी जो डेफिनेशन है उसमें इसके फीचर्स भी इंक्लूडेड है। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट फीचर इज आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट फीचर इज आइडेंटिफाइंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। फर्स्ट फीचर इज आइडेंटिफाइंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस फीचर, फर्स्ट वी आइडेंटिफाई द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन that will be recorded into the accounts books or not recorded। मतलब अपन सबसे पहले अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि वो अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड होगी या नहीं होगी। इफ ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द मनी और मनी टर्म और इन टर्म ऑफ मनी दे आर रिकॉर्डेड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब जो भी ट्रांजेक्शन मनी से रिलेटेड होते हैं उनको ही अपन बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। जो ट्रांजेक्शन मनी से रिलेटेड नहीं होते हैं उनको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो आई रिपीट अगेन, आइडेंटिफिकेशन मीन्स आइडेंटिफाइंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विच आर रिकॉर्डेड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट। दोज ट्रांजेक्शन आर नॉट इन टर्म ऑफ मनी, दे आर नॉट रिकॉर्डेड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सेकेंड, मेजरिंग। मेजरिंग is second important feature. In this feature, in this term, we measure the accounting information in term of money. We measure accounting information in term of money। अपन जो भी accounting information होती है उसको money की term में वैल्यूएशन करते हैं उसका कि वो कितने रुपए की है, कितने प्राइस की है। तो मनी में वो रिप्रेजेंट हो सकती है या नहीं हो सकती, उसको ही रिकॉर्ड करते हैं। जो ट्रांजेक्शन या जो इवेंट मनी में रिप्रेजेंट नहीं हो सकती उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। फॉर एग्जांपल, वी परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000, दैट इज रिकॉर्डेड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट। वी सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000, दैट इज रिकॉर्डेड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बट वी अपॉइंट अ मैनेजर फॉर अ 10,000 salary, that is not recorded। I repeat again, we appoint a manager for ₹10,000 per month salary, that is not recorded because we only appoint the manager। If we paid salary to the manager, that time the paid salary is recorded into the books of accounts। तो it means जो ट्रांजेक्शन मनी में रिप्रेजेंट हो सकते हैं, मनी में जिसको अपन प्रेजेंट कर सकते हैं, उनको ही बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग इज अ आर्ट ऑफ अकाउंटिंग। रिकॉर्डिंग क्या है? अकाउंटिंग की आर्ट है। रिकॉर्डिंग इज अ आर्ट ऑफ अकाउंटिंग इन विच वी रिकॉर्ड ऑल टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन विच इज इन टर्म ऑफ मनी इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो ट्रांजेक्शन मनी की टर्म होते हैं उनको अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। I repeat again, recording is an art of accounting in which we record all the business transaction
which is in term of money recorded into the books of accounts. Recorded into the books of accounts. There are two type of books of accounts. First is journal. Second is subsidiary books. Journal is a main book. Journal is a original entry book. Journal is a original entry book, and subsidiary books is subdivision of journal, in which we record all the business transaction. Okay, beta. Fourth is classifying. Classifying means all the transaction related to the similar nature at collected and posted at one place. That is called classifying. I repeat again. Classifying means all the transactions which are related to which are similar nature, and which are related to the one account. They are collected and posted at one place. That is called classifying. मतलब क्लासिफाइंग में जो सिमिलर टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं, और उनके जो अकाउंट्स होते हैं, अगर वो सिमिलर है तो उनको एक ही जगह पर कलेक्ट करके पोस्ट कर दिया जाता है. उनको अपन क्लासिफाइंग कहते हैं. तो अपन बोल सकते हैं क्लासिफाइंग का मतलब जो एक ही टाइप के ट्रांजैक्शन है या एक ही अकाउंट से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है उनको एक जगह पर कलेक्ट करके पोस्ट करना ही क्लासिफाइंग है. एक जगह पर एक ही टाइप के और एक ही अकाउंट के जो ट्रांजैक्शन है उनको एक जगह पर कलेक्ट करके पोस्ट करना क्लासिफाइंग होता है. इन क्लासिफाइंग we maintain the ledger. In classifying, we maintain the ledger and open accounts for the individual heads. In classifying, we maintain the ledger and open individual accounts for a particular head. Individual account होते हैं particular head के लिए. Okay. Fifth is summarizing. Summarizing means all the transactions are recorded and classified. That time we summarize the classifying transaction. We determine the business performance, business profit or loss, and business financial position. That is called summarizing. I repeat again. In summarizing, we determine business performance, we determine business profit or loss, financial position of the business. That is called summarizing process. Summarizing में अपन बिजनेस में जो भी प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उस सब को अपन समराइजिंग प्रोसेस में डिटरमाइन करते हैं. एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन. इन दिस प्रोसेस वी एनालाइज द बिजनेस रिजल्ट्स एंड इंटरप्रेट इट टू द यूजर्स फॉर द डिसीजन मेकिंग. इन एनालाइजिंग we analyze the business record and interpret to the users for the decision making. And in analyzing, we present the financial information in a manner that all the users are understand and they can make judgment for the results. Communicating. In this feature, we include communicate the business result to the users. There are two types of users: internal users and external users. In internal users, we include owner of the business, employee, management. They are internal users, and external users are government, consumers, creditors, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, बैंक, एक्सेट्रा. तो कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स. इट प्रोवाइड द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर द डिसीजन मेकिंग. दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेटिंग प्रोसेस. कम्युनिकेटिंग में जो भी अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है, अकाउंटिंग डाटा होते हैं, उसको अपन यूजर्स के पास पहुंचा देते हैं. वो इस कम्युनिकेटिंग प्रोसेस में किया जाता है ताकि वो अपना डिसीजन ले सके फ्यूचर के लिए. नेक्स्ट अपन पॉइंट पर आते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या चीज है? सबसे पहले लिखा है मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स फॉर द अकाउंटिंग. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द बिजनेस आर रिकॉर्डेड एट वन प्लेस.
ठीक है। जो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड है उनको अपन एक जगह पर रिकॉर्ड करते हैं और उनको सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करने के लिए अपन को अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। तो हम बोल सकते हैं मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन सिस्टमेटिक मैनर। देयरफॉर वी डिटरमाइन देयर रिजल्ट्स, we determine their performance, we determine financial position of the business. Therefore we maintain our business records. First objective. Second, determine profit or loss. The another objective of accounting, determine profit or loss of the business. By the help of accounting we determine our business performance, we determine our profit or loss, and we can make decision for the future. अगर अपन अकाउंटिंग करेंगे तो अपन को बिजनेस का जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसके बारे में अपन को इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी और आगे के लिए अपन फ्यूचर में डिसीजन ले सकते हैं। डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन? फाइनेंशियल पोजीशन इज द फाइनेंशियल साउंडनेस और वीकनेस ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल का मतलब इकोनॉमिक रूप से बिजनेस साउंड है या वीक है, उसको डिटरमाइन करना अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है। डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, इट मीन्स अकाउंटिंग डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इट चेक द फाइनेंशियल साउंडनेस और वीकनेस ऑफ द बिजनेस। देयरफॉर वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट फॉर द बिजनेस। वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट फॉर द बिजनेस। They show the financial position of the business in term of assets or liabilities. Assets are the property of the business, and liability is the responsibility which are borne by the business. Facilitating management. Accounting helps the management for decision making. Management always require the accounting information. Management always require the accounting information for the decision making, for the budgeting, for the cost control. Therefore, the management can make decision by the accounting information. Providing accounting information. Main objective of accounting is the providing accounting information to the users. मतलब accounting का सबसे बड़ा काम क्या है? वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है टू द यूजर्स। मतलब आई रिपीट अगेन, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। फॉर एग्जांपल, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, ओनर ऑफ द बिजनेस, इन्वेस्टर, कंज्यूमर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, बैंक, गुड सप्लायर। Okay. Next is protecting business assets. And final and last objective of accounting, this protect the business assets by the recording all the transaction into the books of accounts. We know all the assets or liability of the business. Therefore, we can good use of the assets. We control the wastage of assets, we control the resources of business. It means accounting क्या करती है? अपने बिजनेस की जो भी एसेट्स है, प्रॉपर्टी है, उसको प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि अपन सारी चीजों का अगर रिकॉर्ड रखेंगे तो अपन को पता चलता जाएगा कि अपन को किस चीज को ज्यादा यूज करना है, किसको कम यूज करना है। तो अपनी जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, उसको अपन प्रोटेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अगर जेब खर्ची मिलती है, अगर आपको पॉकेट मनी मिलती है और आप सबका उसका रिकॉर्ड रखते हो, तो हो सकता है कि आप जो वेस्टेज कर रहे हो मनी का, वो नहीं करोगे और उसको बचा लोगे। वैसे ही अकाउंटिंग क्या करती है? जो बिजनेस के एसेट्स है, प्रॉपर्टी है, उसकी एक तरह से प्रोटेक्शन करती है बाय द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। अगर अपन सारी चीजों को रिकॉर्ड करते जाएंगे तो अपन को पता चलता जाएगा कि अपनी एसेट्स कहाँ यूज हो रही है, कहाँ इसका मिस यूज हो रहा है, वो सारी चीजें अपन को पता चलेगी। तो अपन कह सकते हैं कि अकाउंटिंग प्रोटेक्ट द बिजनेस एसेट्स। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट समझाऊंगा। ओके, इस जो भी मैंने आज समझा है उसको लर्न करें, अपनी नोटबुक में राइट डाउन करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपेयर रहें। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।